start करूया की? मैडम कंटिन्यू करंतु। हेलो Yes, sir. Ma'am, pranam. Good evening. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening to you all. Let's Good start this evening. session. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Hello. Is it visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's start our session. So this is the third counseling class of your operational dimensions of education MES-015. As you know, we have already completed 6 units, and probably today we will complete on this unit 9, sorry, unit 7, 8, and 9, so that we can complete block 2. So in this way, in the last class also we have discussed about different organizations, different types of education system in our country, as well as different types of schemes. Today, under this unit 7, let us discuss about institutional arrangements of educational operation. So whenever we are operating educational activities or practices, again we need some system or institution which can implement different types of educational activities throughout the society. So in this process, we must know what are those organizations, what are those institutions, how are they working at different level. So under this unit 7, uh, the main objectives of this learning this unit is that you can be able to understand different constitutional provisions for structure of education in India. You can also describe structure, function of different educational administration at different levels, professional colleges, um, discuss the interrelationship and responsibilities of these authorities and different international agencies, national international agencies we will learn, which are also helping our operational system in education. So in this concern, let us move ahead. So there are different contents, those are included in this particular unit. Those are local level bodies for educational operation, state level bodies for educational operation, MHRD, educational bodies helping the MHRD. Can you tell me, whenever you are saying about local level bodies of educational operation, what are those educational institutions which are also implementing different educational practices in that locality? कौन टा सब ହେଇଥିବ କୁହ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ କଣ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡାକ ରହିଛି? Education under Panchayati Raj. पंचायत राज सिस्टम. ଜଣେ କୁହ. Ma'am, पंचायत राज सिस्टम. ହୁଁ. Village Education Committee. Those are working locally, is not it? अच्छा ଆଉ କଣ? बलवंत राय मेहता कमिटी. No, I'm asking about those institutions. municipality, और hmm. ଆଉ କଣ? Ma'am, diet. Different. Diet. Diets are there, schools, colleges, Ma'am, different DPT. types. They are working for
this local level operation of educational practices. And state level, some organizations are working. So in a hierarchy, if you find at international level, some organizations are there. At national level, some organizations and institutions, agencies are there, which are responsible for executing different types of educational policies, programs, and deciding different plans for our state or central level. And whenever we are moving to district level, state level, district level organizations are there, which are taking care of educational practices for that particular district. And in that context also, whenever we are moving to this grassroots level, some organizations are there which are also working for our local area. Okay, so in that way, that educational operations practices are working smoothly. So some responsibilities, division of responsibilities we can see. Why are we doing this type of division? National level, international level. Why? Because we want to divide our responsibilities for different locality or different area. Okay, so for that purpose, we are having different levels of operation at national, So, ma'am, we can international. say it is not good to centralizing the power. Yes, decentralization of power, decentralization of operation. So local level bodies for organization, ଯେମିତି କହୁଥିଲ, local level government, self government, पंचायती राज system, district, ଯେମିତି କହୁଥିଲ, district level some organizations are there, school colleges are there. So mainly Balwant Rai Mehta committee jota rahila, it has given emphasis on decentralizing different activities for development of our country. It has recommended the establishment of an interconnected three-tier organizational structure of democratic decentralization at the village, block, and district level. Later on, 73rd and 74th Amendment of the Constitution in India, it has given emphasis on decentralization of operation of different activity, so that at grassroots level we can empower our people. They will be directly involved in different types of executive developmental activities. Okay, so for that purpose, 73rd and 74th amendment এটা মনে রাখিদিও of constitution କହିଲା নাই ସେ decentralization হব community level ରେ ପିଲା ଲୋକମାନେ involve ହେବେ different activities ରେ. So education under panchayati raj. Okay, panchayati raj village education committee jota kuha hochi tame kahilo jota. So what are different functions of panchayati raj or village education committee? कौन सो पढ़ी कुह कौन सब तार activity? Have you ever involved with this type of committee directly? मैम 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏନଶ୍योର କରିବା ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭିଲେଜ ଏଜୁକେସନ କମିଟିର ମେନ୍ କାମ ରହିଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ୟାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବ. ଆଉ କଣ? मैम पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मदर टीचर एसोसिएशन ଆସୋସିଏସନ ତାକୁ ଗଠନ କରାଯିବ. ଆଉ କଣ? डेवलपमेंट प्लान करियो ସ୍କୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ. ଆଉ କଣ? मैम it provides the building and furniture for the school resources. Different type of resource help can be provided to the school. Madam, How health, come? agricultural development, women child development. So it's a link between panchayat and other administrative activity organization, and it also assess the activities of education system in that particular locality or panchayat. पंचायत रे कौन होगी
ताको मध्ये से देखी थे अच्छा different functions are here village education committee रा जोटा कि आम देखि परिबा गोटे चित्र माध्यम रे देखा होची helping quality improvement utilization of school improvement grant supervision and monitoring of school providing support to daily function of school ensuring teachers regular attendance ensuring 100% enrollment of and retention of children providing support to daily function of school सो ये सब ताकर सब मेंबर्स माने रही थांती को माने मेंबर्स रही थांती बीएससी रे विलेज एजुकेशन कमिटी रे को माने रहिबे जने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मेंबर्स माने रहिबे पेरेंट्स माने रहिबे मैम सरपंच माने ग्रामर के जण शिक्षित महिला तापरे के जण पेरेंट्स रहिबे हमर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सी भी रुहंती हेडमास्टर पीटीए एमटीए ओके सो तांकर रिप्रेजेंटेटिव जने माइनॉरिटी कम्युनिटी रा वुमेन कम्युनिटी रा सबु डिसएडवांटेज ग्रुप रा समस्तकर गोटे समस्त सेइतरे इन्वॉल्व केवल गोटे वर्गर लोक रहिबेनी मेंबर हिबे ता सहित मध्य माइनॉरिटी कम्युनिटी रू डिसएडवांटेज कम्युनिटी रू वुमेन मान कम्युनिटी रू एससी एसटी कम्युनिटी रू समस्ते सबु रिप्रेजेंटेटिव सेइतरे कमिटी रे रहिबे ओके सो दैट we can say it's a kind of what गोटे डेमोक्रेटिक वे रे समस्त समस्तंकर जहाँ भी रही डिमांड को प्रेजेंट करेंगे आउ गोटे पंचायत स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन एटा कोन PEC where the panchayat comprises only one village the committee for education is named at panchayat standing committee on education जदि गोटे केवल गाँ थिबो ताहले केवल स्टैंडिंग कमिटी गोटे करा जीवो तार भी फंक्शन से ही समान पाखा पाखी पढ़िबो एगुडा को पंचायत समिति कोन एटा गोटे ब्लॉक लेवल बतुलका लेवल रे एटा गोटे हेई थाए हां standing committee education is set up for management of educational program covering adult education non-formal education early childhood care education and school education up to upper primary this is a kind of समिति आबा गोटे ग्रुप आमे कहि परिबा माने सब प्रकार एक्टिविटी को इन्वॉल्व होई थांती जेमति कि गोटे सोसाइटी जेमति समिति माने कोन सोसाइटी भलिया गोटे ब्लॉक लेवल रे जो माने नॉन फॉर्मल एजुकेशन एडल्ट एजुकेशन ए सब गुडी को केवल स्कूल एजुकेशन नो ए सब रो केयर से माने नै थांती अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ए सब जिंस सेटा भी मेनली तारो मेन फंक्शन कोन रहबे पंचायत समिति रा टू सुपरवाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन एगुडा को सब होउछ ना नाही एडल्ट लिटरेसी ठीक से चलछि कि नाही ए एजेंसी बा ए ऑर्गेनाइजेशन एटा ही देखिते पंचायत समिति then BRC you might have heard this word BRC CRC कौन सेटा कहिला मते कि जानिछ कि सो मेंबर अछ BRC रे बीआरसी ब्लॉक रिसर्च सेंटर सर मैम कौन सेटा BRC CRC कौन को BRC कौन CRC कौन को जो माने एजुकेशन फील्ड रे अच्छा काम करछ स्कूल टीचर समस्त जानिथिबो सब मैडम सीआरसी जोटा क्लस्टर लेवल पर्टिकुलर गोटे क्लस्टर रे केते गुडा स्कूल आइदर एलिमेंटरी हो हाई स्कूल हो एमाना को कंट्रोल ताको कंट्रोल मैम करथाय सीआरसी गोटे ग्रुप होचंती क्लस्टर सीआर हां क्लस्टर रिप्रेजेंटेटिव कोऑर्डिनेटर Cluster resource coordinator. क्लस्टर रिसोर्स मैम बीआरसी जो से माने पेरेंट टीचर एसोसिएशन करथांती माने माने ब्लॉक अंडर जो सब स्कूल अछि ताको केमती माने मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया जाय परबा मेन तार जहाँ भी आवश्यक जिनस जो सेटा को से प्रोवाइड करि थांती से माने वेरियस टाइप रो कल्चरल प्रोग्राम करि थांती माने एजुकेशन में अच्छा एक हमरा सुरभि हैला जो से टाइप रो ब्लॉक लेवल रे एटा हेइता है ना कि
So at the state level, state resource group ଗୋଟେ ରହିଛି, it is formed for the purpose of pedagogical renewal, structuring the curriculum, formation of text, reformation of textbooks, organizing training program. ହଁ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲର ଏସ୍ଆରଜି ଷ୍ଟେଟ୍ ରିସୋର୍ସ ଗ୍ରୁପ ରହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ବିଆରସି କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି ବ୍ଲକ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟରକୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଆରସି ର କଣ ସବୁ କାମ ହେଇଥିବ ତମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସୋ ଯେମିତି କି क्वालिटी एजुकेशन केयर ताकू दिया जाई परिबो एलिमेंटरी लेवल रो पिला मानकू, टू अरेंज फॉर रेगुलर मीटिंग फॉर टीचर्स, टू अरेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल टीचिंग एड्स, केमती क्वालिटी डेवलपमेंट हे परिबो स्कूल रो टीचिंग लर्निंग रे, तारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल रे हो, करिकुलम रे हो, टेक्स्ट बुक रे हो, टीचिंग एड्स रे बाबद रे हो, ए सब जिंस को आमे देखि परिबा। टू क्रिएट गुड एनवायरनमेंट बाय अरेंजिंग वेरियस कल्चरल लाइब्रेरी एंड एक्टिविटीज, इम्प्लीमेंट सजेशन जोटा भी एससीआरटी आउ डाइट रो जो सजेशन आछी बा इंस्ट्रक्शन आछी ताको ठीक से हमें ग्रास रूट लेवल ले इम्प्लीमेंट करि पाछु कि नै, ब्लॉक लेवल रे सेटा केमती के कहबे, सेटा ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जो थांती आरपी से कहि पारे ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। अच्छा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर जेमती कहउथिले जे किछिटा ग्रुप ऑफ स्कूल्स माने मिसी किना गोटे लोकालिटी रो क्लस्टर ही थांती, किछिटा 5-6टा स्कूल हेगले से माने गोटे मिसी किना गोटे क्लस्टर हेबे, एंड ताकू के कंट्रोल करिवो, ताकू ता विस्तार मॉनिटरिंग की करिवो ना क्लस्टर रिसोर्स ग्रुप बा सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। Main objective is to empower school teachers in its jurisdiction by providing training दबा, ताकू मोटिवेट करबा भलो से केमती से टीएलएम यूज करके पाठ पढेबे, प्रोड्यूसिंग यूजफुल लर्निंग मटेरियल्स, अरेंजिंग को-करिकुलर एक्टिविटीज, सजेस्टिंग प्रैक्टिकल एंड सिंपल अप्रोच। मेनली टीचर ट्रेनिंग केमती भलो से हेई परिबा, क्वालिटी मॉनिटरिंग करि परिबे, एंड इट्स ए काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कोऑर्डिनेटिंग इन बिटवीन ग्रासरूट लेवल स्कूल्स with the higher authorities, higher रे कोन चलची कोन इंस्ट्रक्शन आछी ताकू केमती आमे इंप्लीमेंट करि पाइबा, सेति पय सीआरसी करते। आ गुटे ऑर्गेनाइजेशन कोन जिला परिषद कवर्स एन एंटायर डिस्ट्रिक्ट एक्सक्लूडिंग म्युनिसिपैलिटी एरिया जोटा रहिची। जिला परिषद also sets up standing committee on education as a statutory body for management of education in its jurisdiction। सो जिला परिषद रो गोटे ऑर्गेनाइजेशन जोटा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन गोटे एंटायर डिस्ट्रिक्ट को सेटा कंट्रोल करथा है, बट एक्सक्लूडिंग म्युनिसिपैलिटी एरिया जोटा थाए ताको एक्सक्लूड करिकि आउ सेठी मध्य तार किछि मेंबर्स थांती, कंपोजिशन तमर बही रे सब देइची, किछि जण मेंबर्स रहिबे, नॉट लेस देन 15 जण रु कम हबो नै, 21 मेंबर्स रहिबे, जोथरे के एटलीस्ट 1/3 मेंबर्स बी वुमेन, 3 भाग रु गोटे भाग वुमेन थिबे, एवं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एससी एसटी कम्युनिटी ओबीसी कम्युनिटी माइनॉरिटी पेरेंट टीचर एसोसिएशन ए समस्ते से मेंबर रहिबे। से माने सब जाय कि विभिन्न प्रकार मॉनिटरिंग करिवे, केमती भलो स्कूल रे पाठ पढा होउची कि नै ए सब विषय मध्य कहिबे। दैट इज द जिला परिषद रो किछि काम रहउची, तार फंक्शंस मध्य देइची कोन जिला परिषद सेही समान पाखा पाखी सब ऑर्गेनाइजेशन रो रहउची, क्वालिटी मॉनिटरिंग, सुपरविजन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम and preparing different plans, responsibilities to boost educational program to achieve total literacy and universalization of elementary education, and to guide panchayat samiti standing committee on education जोटा कि जिला परिषद ता कोन ता ऊपर रहिला, जोटा पंचायत राज पंचायत जो रहिछि तार ऊपर रहिला जिल्लाटा, तो से ताकू मध्य विलेज भीटी को किछि इन्फॉर्मेशन दबो, गाइड करिवो, बा से लेवल लोक मान को जो माने अछंती पर्सन मान को जो माने कम्युनिटी मेंबर्स अछंती ताको मध्य गाइड करिवो। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इन म्युनिसिपैलिटी एरिया, अर्बन सेमी अर्बन एरिया। सो एडा तो जकला ग्राम पंचायत जोटा रहला वीसी विलेज एजुकेशन कमिटी, जिला परिषद एडा सब रहिले से माने गुटे विलेज एरिया रो। सो केमती आमे मैनेजमेंट करबे एजुकेशन को म्युनिसिपैलिटी एरिया बा अर्बन एरिया बा सेमी अर्बन एरिया, जोटा कि आमे कहितरे म्युनिसिपल बॉडीज जो माने रहि छथि म्युनिसिपैलिटीज तार मध्ये किछि एजुकेशनल फंक्शंस रहिछि। ओके, सो म्युनिसिपैलिटी जो सब रहिला से माने सब सेही 74th अमेंडमेंट एक्ट रे कॉन्स्टिट्यूशन से माने मध्ये रिस्पांसिबिलिटी ताकर मध्ये रहिछि जे प्रमोशन ऑफ कल्चरल एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स। सो एजुकेशनल इज आल्सो वन काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी। कौन सब करिवो
कौन सब एक्टिविटी म्युनिसिपालिटी रहइबो एजुकेशन एस्पेक्ट रे के कहइबो को सेम थिंग म्युनिसिपालिटी मध्य प्रमोटिंग एलिमेंटरी एजुकेशन टोटल लिटरेसी जोटा सुपरविजन एगुडा रहइबो केवल रिक्रुटमेंट से माने करबेनी बाकी सब क्वालिटी डेवलपमेंट पे काम करियो तो एटा गोटे डायग्राम तुम देख सेटा गला हमें लोकल लेवल बा डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल रे कोन चलची के कहबो को is it visible to you all Yes, ma'am. Yes, ma'am. को स्टेट लेवल रे केमदी होची इंप्लीमेंटेशन एजुकेशनल ऑपरेशन मैम SCRT BSc आउ regional और सर्कल ऑफिस, टेस्ट बोर्ड, टेक्स्ट बुक बोर्ड, जिला परिषद. So state level it's a broad kind of picture where you will find different types of organization. It is becoming more and more broader as comparison to community level. Different more organizations are working for the benefit of education. You can find SCRT, Ministry of Education. जो टाइम कहबा SCRT रा पछरे अछि आगो Ministry of Education हमर एजुकेशन मास एजुकेशन डिपार्टमेंट अछि जोटा अछि स्टेट लेवल रे सेक्रेटेरिएट अछि गोटे डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट अछि मिनिस्ट्री द गोटे मिनिस्टर रहइबे एजुकेशन रा ता सहित सेक्रेटेरिएट रे मध्ये गोटे डिपार्टमेंट रहिबो तार डायरेक्टरेट रहिबो डायरेक्टरेट रो सहित जोडित कोन जेमति डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल मास टीचर एजुकेशन एमति सब डायरेक्टरेट रहिछि संडी एजुकेशन डायरेक्टरेट रहिबो ताकू कोऑर्डिनेट करबो एससीआरटी कोन फुल फॉर्म की कहबो एससीआरटी रा फुल फॉर्म कोन Ma'am, State Council of Educational Research and Training. एससीआरटी ओडिसा रे मध्ये रहिछि एवं ता सहित रिलेशन हछि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जोडे सेकेंडरी एजुकेशन सहित रिस्पांसिबिलिटी तार रहिबा टेक्स्ट बुक जो मैं टेक्स्ट बुक बनेबे से डिपार्टमेंट रहिछि रीजनल और सर्कल ऑफिस ता सहित मध्ये रीजनल सेंटर जो ऑफिस सहित डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस सब डिस्ट्रिक्ट रे गोटे एजुकेशन ऑफिस रहिछि ता सहित लिंक रहिछि जिला परिषद आ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट गुडा करो जोटी कि रिसर्च भी हबो ट्रेनिंग भी दिया जीवो एवं किछि बेनिफिशियल काम रहिबो से माने डायरेक्टली कांटेक्ट रे रहिबे ट्रेनिंग मेन टीचर एजुकेशन रिसर्च एगुडा को सब द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अगेन इज वर्किंग फॉर अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया अर्बन एरिया रे म्युनिसिपैलिटी कोऑपरेशन आउ रहिछि नगरपालिका आउ रूरल एरिया रे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस रूरल एरिया पई बीईओ माने जो माने काम करछंती हां तार मध्ये विलेज एजुकेशन कमिटी रहिछि आउ ग्राम पंचायत तो एति कि तुमको टिके मने रखिया को पड़िबो हैला सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर सो टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तुम जानि परछो डिफरेंट मिनिस्ट्री लेवल रु गला विलेज लेवल पर्यंत सो दिस इज द स्ट्रक्चर where educational operation and practices are going on okay डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एउडा को सब सेक्रेटेरिएट डायरेक्टरेट एउडा को सब रहिछि जोटा डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स एउने सब करूछंती एवं ताको फाइनली इंप्लीमेंटेशन विलेज लेवल रे बा अर्बन एरिया लेवल रे होछि अच्छा देन हां मैम सर्कल ऑफिस रो काम कोन रहबो सब mainly coordinate between the SCRT বা regional center जोटा regional centers हां ता सहित डिस्ट्रिक्ट लेवल सहित सेटा कांटेक्ट रे रहिबो ताकू मेन कोऑर्डिनेट करिवो ए माने जहा कहउछन इन्फॉर्मेशन गुडा को एठी की जीवो एवं एठिकार डाटा मध्य ऊपर को जीवो रीजनल सर्कल रीजनल ऑफिस बा सर्कल ऑफिस जेमति हमें कहि पारियो ना मानकर किछि एग्जीक्यूटिव दायित्व अछि कि हाँ एग्जीक्यूटिव माने नउछन डीओ बीओ जो माने सब रहउछन से माने भी रहउछन प्लस टीचर्स माने भी प्रमोशन हे कि जाउछन ए भलिया सेति पे स्पेशल रिक्रूटमेंट होछि ना मानकर डिपार्टमेंटल प्रमोशन हे थाई सेटा तुमे जान तो उडे विभिन्न प्रकार पोस्ट उडा को बाहरु छि एजुकेशन ऑफिसर मानकर ओडिसा एजुकेशन सर्विस से माने मध्ये रहिताने प्रमोशन भी होउछि मेनली एबे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मान को सब रखा होउछि
आगे जो माने एजुकेशन ऑफिस रे माने तमरा ओडिसा एजुकेशन सर्विस स्कूल ब्रांच से गुडा को सब रहउचंदी आगे थैंक यू अच्छा मैम तो एई भले तमरा सब रहिची ऑफिसर माने मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन रीजनल और सब कल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ऑफिस ऑफ एजुकेशन ब्लॉक लेवल ऑफ सब देइची बहिरे देखियो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन it is having three main function: regulatory, operational, and directive function. Regulatory means controlling different activities. Operational माने different जहाँ भी रहिला तमरो काम execution करा जिवो जहाँ भी आसुची उपरु किछि प्लान पॉलिसी ताको से माने execute करिवे डायरेक्टिव फंक्शन गिविंग डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट्स जो माने रहिले सनु कोन करा जिवो कोन न करा जिवो तहितरे से माने गाइड करिथांती सब बहिरे देइची बहुत गुटे जिंस मु सेति पे आउ लेखिनी सेडा देखिबो तमे रीजनल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज ब्लॉक लेवल बॉडीज जोटा हम डिस्कशन कले एसीआरटी रो भी तमे देखुथबो स्टेट काउंसिल ऑफ जोटा हम रहिची एसीआरटी ना सुनिथिबो तार मध्य फंक्शन स्ट्रक्चर बहिरे देइची तार डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गुडा को रहिची रिसर्च डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से तार मेन काम रोची मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन so they are also involved with diet crc and school directly indirectly they are taking some data from the lower level as well as giving direction and they are also monitoring the subordinate schools सहित तार मेन काम रहिला एसीआरटी रो एकेडमिक स्टाफ अछंती डाइट रो एकेडमिक स्टाफ क्लस्टर रिसोर्स सेंटर रो भी कोऑर्डिनेटर्स माने रहिछंती सो एसीआरटी अंडर रे ही मेन तमरो चालुची एग्जीक्यूशन फंक्शन बा ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटीज विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल एजुकेशन जति काम एसीआरटी अंडर रे सेडा सब रहिला बोथ सेकेंडरी एंड एलिमेंटरी लेवल बा तमे कहि पारे प्राइमरी लेवल तो डाइट गुडा को जोटा रहिची से माने मेनली ट्रेनिंग दउछंती सीआरसी को एवं सीआरसी रो जो माने मेंबर रहिचंती से माने स्कूल सहित इन्वॉल्व रहिचंती एवं ताको मध्ये डायरेक्शन दउछंती तो कौन सब मेन एक्टिविटीज ऑफ मेन फंक्शंस ऑफ एसीआरटी रो कौन सब फंक्शन रहिची के कहबो को समझती लेखा है कि डाइट से तो कांटेक्ट रहिबे से मैम बुक पब्लिश करता है हमरा एससीआरटी तापर हम It's 5:42 p.m. ओके देन साउंड टिके सुबुनी मैम प्राइमरी सेकेंडरी टीचर्स मन को ट्रेनिंग दे थांती मेन डिफरेंट फंक्शंस भितर गोटेला टीचर ट्रेनिंग टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन different implementation of different research activities capacity building program for teachers or educational administrators so training research book publication innovation teacher resource creation ये सब काम एसीआरटी रा रहिची स्कूल एजुकेशन पाई मेनली काम करथे and also it is coordinate with NCRT NCT एसीआरटी रो आउ गुटे काम होला ऊपर लेवल जो माने सेंट्रल लेवल रो ऑर्गेनाइजेशंस गुडा कर रहिछन ताको सहित मध्ये कोऑर्डिनेट करथे आउ गुटे मध्ये ऑर्गेनाइजेशन रहिछि अब जदियो एटा आम राज्य रे नाही किंतु किछि स्टेट रे रहिथा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग पाई गोटे ऑर्गेनाइजेशन रहिछि जोटा कि आम राज्य रे सेटा नाही बट अलगा राज्य रे किछिटा रहिछि so main function is to manage provide different management support to the schools as well as provide training एटा ओडिसा रे नाही बट अलगा जेमती किछिटा स्टेट रहिछि सेइतरे रहिछि एटा
मैम सीआरसी केतरा स्कूल को नेकी हुए सेटा पर्टिकुलर सेमती अछि ना सेमती ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିକି ଲୋକାଲିଟିରେ ଧର କିଛିଟା ଦେଖିକି ନା ପାଖାପାଖି ତ ଥିବ 5-6ଟା 7ଟା ଏଇଭଳିଆ ନେଇକି ବେଶୀ ନାହିଁ 6-7ଟା 8ଟା 10ଟା ଭିତରେ ଏମିତି ନେଇକି କରାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହିଛି ଷ୍ଟେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ more than ଏଜୁକେସନ 10 भी school add होची CRC ହଁ cluster level more than 10 भी school add हो जाउची ନା ଯଦି ସେମିତିଆ ଲୋକାଲିଟି ଅଛି ବେଶୀ ଦେବେନି ଅଳ୍ପ ନେବେ କାରଣ କ୍ଲଷ୍ଟର ମାନେ ଆମେ ସେମିତି ହେଲେ ସେଟା ଏତେ ବଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନୁହେଁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ବେଶୀ ଏମିତି 10ଟାରୁ मैम आमो ଅଧିକ ସେମାନେ cluster 17 schools अछि ହଁ 10ଟା 20ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ମେନଲି ନେବା କଥା କମ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତ ବେଶୀ କରି ହବନି ବେଶୀ ଆମେ ନେଇ ପାରିବାନି ସେଇଥିରେ thank 17 you ଯଦି ନଉଛନ୍ତି ବି 20ଟା ଭିତରେ ରହିଲା ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ନେଇକି ବି ହେଇପାରିବ ମାନେ ଯେତିକି ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତମର ଷ୍ଟେଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି SIT ଯୋଉଟା ଫର implementing educational technology within the schools. So it helps in preparation of educational programs for TV channels for school education. तो किछि SIT रे कोन डिफरेंट वीडियो प्रोडक्शन करा जाय थाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया जेमति किछि माने छोट शॉर्ट फिल्म्स हला मूवी हला एगुडा को प्रोडक्शन करा जाय था स्टूडियो तार रही छी जोथरे की डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स गुडा को मते टेलीकास्ट करा जाय था माने टीवी रे भी देखाय जाय था एवं किछि मटेरियल मते डेवलपमेंट करा जाय था अच्छा आउ कोन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम तो हम पढ़ी छे ऑलरेडी डीपीएपी जोटा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन रो गोटे पार्ट गोटे प्रोजेक्ट 1994 रे लॉन्च हितला ए विषय में ऑलरेडी पढ़ी सारची बहुत गुटे कथा जार मेन ऑब्जेक्टिव रहितला हमरो प्रोवाइड एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन reducing dropout rates less than 10%, increasing learning achievement of primary school pupils by at least 25%, reducing the gap among gender and social group to less than 5%. एगुडा का तार मेन फंक्शन रहितला ऑब्जेक्टिव रहितला आ गोटेला एसएससी रिलेटेड इट इज ए काइंड ऑफ प्रोजेक्ट और एजेंसी हम कहि परिबा ये मध्य गोटे एलिमेंटरी एजुकेशन को के भली हमें बेसी एनरोलमेंट करि परिबा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन करि परिबा सेइथरे तार मध्य फोकस रहितला माने पढि साइच सब ब्लॉक रेट अछि अच्छा MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तुम जानिथिबो सुनिथिबो यार मध्य दीटा डिपार्टमेंट रही गोटे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डील्स विथ प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन आउ गोटे डिपार्टमेंट रही हायर एजुकेशन जोटा यूनिवर्सिटी लेवल so MHRD is also responsible for what for providing support to education system throughout the country at the central level eta rahichi tama central level apex organization ame koi pariba ithi ministry of human resource development अच्छा आउ कोन सब बॉडीज गुडा को रही एजुकेशनल बॉडीज which are supporting MHRD at the central level जेमति रहिला सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE UGC काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज National University of Educational Planning and Administration, National Council of Education Research and Training NCRT सब ना सुनिथिबो मने अछि गुडा को सब गोटे गोटे ब्लॉक रे मध्ये हम पढिथिलु गुडा को सब मने अछि गुडा को सेही विषय टिके आज हम ए विषय मध्ये डिस्कशन करिबा So, am I audible? Yes, ma'am. yes ma'am Yes, ma'am. Yes, Central Advisory Board of Education, जोटा it's the oldest and a very renowned institution or agency आमे कहि परिबा oldest advisory body which was started in the year 1920 on the recognition of Calcutta University. इटा बहुत ही पुराना जेमती हमरो ब्रिटिश टाइम रे मध्ये बिफोर इंडिपेंडेंस सेटा काम करथला
main function is to advise or on any educational Yes, matter. ma'am. Main function is to advise any educational matter. ଆଉ କଣ to call for information and advice regarding educational development in India. ଦେଇଛି ଲେଖିଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ. What are the functions of CAB? ଦେଖିବା ପଢି ପାରିବ to Excuse me, madam. ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ Previous ଜିନିଷ slide ଟା 1920 ରେ ଏଇଟା ଟିକେ କମ Okay. ପିଲା ଟିକେ ପଢି ପାରିବନି ବୋଲିକି ମୁଁ ଏଟା ଟିକେ ବଡ ଲାର୍କ କରିଦେଇଛି. Okay. Say this, Thank you, oldest madam. and highest advisory body in India, established in the year 1920, and it is established by the recommendation of Calcutta University Commission in the year 1917-19, but dissolved in 1923 as a measure of economy. सेटा dysfunction हे जाइतिला, but तापरे पुणी सेटा हमर रिन्यू होई कि पुणी एबे मध्ये सेटा चलीची. So its main function is to review the progress of education in country from time to time, to appraise the extent and manner in which the education policy has been implemented, to advise the central and state government regarding education. सब विषय responsible थाए. अच्छा, UGC रो काम कोन के कहबो को? It's a very renowned and popular organization. सुनी थुबो सबोळे UGC विषय ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ତମେ ନାଁ ଲେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛ ଆଗ ଦେଖୁଛ ଇଟ୍ ଇଜ affiliated by UGC or not. ଫେକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ UGC ଦେଇଥାଏ, ଇନଫର୍ମେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ. So UGC is the statutory organization established by the Act of Parliament in the year 1956, and it's a apex organization for higher education. ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲର ରିକମେଣ୍ଡେସନ ମାନେ renowned ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ କହିପାରିବା. For it is mainly it is coming its main function is to improve university education. Quality केमते आमे यूनिवर्सिटी बा हायर एजुकेशन रे हेई परिबो सेटा तार मेन काम रहिछि. सो फंक्शंस गुडा को मध्ये एठी देइछि. फाइनेंशियल ग्रांट भी यूजीसी देई थाए, जेंति हमें कहू ना यूजीसी स्पॉन्सर डिफरेंट सेमिनार गुडा को सुनुथबो और डिफरेंट यूजीसी ग्रांट देई थाए विभिन्न यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कोन पई विभिन्न कंस्ट्रक्शन पई बा कोनोसी एक्टिविटी पई स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटी को मध्ये एटा कंट्रोल करथाय तार क्वालिटी को. आउ कोन काम तार यूजीसी रो रैंकिंग प्रोवाइड करे मैडम. रैंकिंग हां आउ एनआईआरएफ गुटे रैंकिंग भी से भी देता है. एनआईआरएफ मैम नेट एग्जाम भी कराए क्वालिटी टीचर्स मानन को अपॉइंटमेंट करया पइला. यूजीसी करथले तापरे एबे मझिरे देइथिले यूजीसी रो आ गुटे भी जो कोन सीबीएसई भी बेले कराए. सीबीएसई तापरे नेट एग्जामिनेशन भी नोची चार्ज. तो यूजीसी आगु करथला एबे भी करची. एबे भी तार मेनली तार गाइडलाइंस गुडा कंट्रोल करथाय. आउ कोन फाइनेंस तो देइते जेटा रहउची हमर स्कूल कॉलेज गुडा को ग्रांट रिक्वायरमेंट आ विभिन्न प्रकार इन सर्विस ट्रेनिंग मध्ये प्रोवाइड करथा यूजीसी टीचर्स मान को कॉलेज टीचर मान को. मैम क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एजुकेशन इंप्रूव करता है. यस क्वालिटी मॉनिटरिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आ इक्विपिंग लैबोरेटरी से ता पई भी फंडिंग करथाय फाइनेंशियली. यूजीसी रो फाइनेंस मेनली हायर एजुकेशन को सपोर्ट करिया पे यूजीसी रो बहुत रे तार मेन फंक्शन बा मेन रोल रहिछि सेइतरे. हेले अच्छा यूजीसी ग्रांट गुडा को मेंटेनेंस ग्रांट एंड डेवलपमेंट ग्रांट हैला दीटा प्रकार ग्रांट देते गोटे मेंटेनेंस गोटेरा डेवलपमेंट. किछि डेवलपमेंट लैबोरेटरी बनेला लाइब्रेरी बनेला बिल्डिंग तयारी कला ताले पैसा दबो. मेंटेनेंस ग्रांट माने किछि एनुअल ब्लॉक किछि पैसा देते जोटा कि कॉलेज को मैनेज करिया पई बा मेंटेनेंस पई किछि दिया हिते. जेमति कि किछि वर्ष को वर्ष किछि ग्रांट एनुअल ग्रांट से दे दी थे. तो दी प्रकार ग्रांट से देउची.
ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା CSIR, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ମେନଲି ଆମର ଆସିଥିଲା କେବେ 1942 ରେ। It runs 37 laboratories and 39 field station on extension center. All India Council for Technical Education, already we have learned about it. It is established in the year 1945. It is also one kind of advisory body and it is mainly responsible for proper planning and coordinated development of technical education, jota engineering rahila, polytechnics gudaka rahila, management education, management organization gudaka rahila. Those are mainly advised by the AICTE, All India Council of Technical Education. So ବିଭିନ୍ନ ତାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଜ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ତାର ବୋର୍ଡ ଅଫ ଷ୍ଟଡିଜ। ଆଚ୍ଛା ସବୁଠୁ ତାପରେ ତମେ ଯୋଉଠି ପଢୁଛ ଇଗ୍ନୋ ବିଷୟରେ, ଇଗ୍ନୋ ବି ଗୋଟେ ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲ ଅପେକ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ that is also helping in distance education. କେବେ ହେଇଥିଲା ଇଗ୍ନୋ established? 1986 85 ହେଲା। 1985. Mainly it is providing Ma'am, quality 86 higher education on distance Ma'am, mode. ma'am, IGNOU ହେଇଥିଲା 86 ନା 85? 85 ତ ମୁଁ କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ତମେ କୋଉଠି ପଢିଲ କି 86? Ma'am, ମୁଁ 85 ରେ ତାର ପଢିଥିଲି ପାସ୍ ହେଇଛି। ma'am, IGNOU Act ଆସିଲା 85 but it is established in the year 1986 ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ma'am। IGNOU ର ଯୋଉ ପାସ୍ ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରେ 1985 ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା, ଯୋଉଟା କି କନସେପ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆମର ma'am, ଏତେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ established 86। 86 ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା। ଏଟା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଗରୁ ଏତେ ବଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ କୌଣସି ଲର୍ନର କୁ ଦେଇ ପାରିବ। ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଆସିବାର ବେଶ ପାଖାପାଖି ଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା। It is also one kind of largest university in our country for distance learning. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ମ୍ୟାମ୍ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ହେଇଥିଲା 82 ରେ। ତାପରେ 86 ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ 86 ରେ ଏଟା ହେଲା। ସୋ ସେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି, ତାର ବହୁତ ଗୁଡେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ରହିଛି, ଯେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଟୁ ଅଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ સોસાયટી, offer high quality innovative and need based program at different level. So it is having many programs, ତାର functions, objectives ଏଟା ସବୁ ବହିରେ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଓପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ, କ୍ୱାଲିଟି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ତମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ କାଉନସିଲ, ଏଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ସ ବଡି ଯୋଉଟା କି ମେନଲି ଆମର ODL ମୋଡରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହୁଛନ୍ତି, ଦେ ମଷ୍ଟ ବି affiliated by the Distance Education Council. It's an apex body which is responsible for promotion, maintenance of standard and coordination of open distance learning. बेले बेले तुम देखुथुबो ना डिस्टेंस रे एमए कर दियो, कोउतरे साइंस रे फिजिक्स कोइ किछि आसीबा दरकार नै, डिस्टेंस रे पीएचडी कर दियो, डिस्टेंस रे बीएससी कर दियो, सब ऑफर आछी ना। तम माने कर दो कोन कोन हां किछ तक जीवा पड़ियो, हम एपटे जॉब करबा आ डिस्टेंस रे हमें कोन करिया, सेपटे ना लिखे दो, दीटा अनुष्ठान में पढ़िबा, सेपटे हमर डिग्री मिलि जिवो। तो समाने भी कहबे हां ना ना किछि आसीबा दरकार नै, आपन किछि करिया पड़िबनी, आंध्रा रे होउची आ कोटी कोटी सब होउची, केवल पैसा दे दियंतु, एडमिशन कर दियंतु, एडी देंती परीक्षा कर देबा, आपन सर्टिफिकेट पाइ जिवे। सो सेडी हमें देखिबा जे whether this university is affiliated by Distance Education Council or not. जदि हेइ नथिबो ଏଇଟା खाली ଆଗ ମାନେ ୟୁଜିସି ଏବେ ଏଇ ବୋର୍ଡଟାକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିକି ଏବେ ଡିବି ସେ ଫର୍ମ କରିଛି। ଏବେ ଡିସି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି, डीएससी करूनी काहेकि ना ଡିବି तमरा ଅଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ବ୍ୟୁରୋ, ସେଟା ଏବେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। सेटा ही सब ଆପଣ कंट्रोल ଜାଣିବେ। करछि डीबी। तो एटा तोर ହଁ पुराना बही बोली डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ହଁ देइछि। तो तमे मध्ये लेखि देई परिबो, जदि क्वेश्चन पढिला तमर सेतले मध्ये लेखि देई परिबो डीसी न लेखि कि डीबी लेखिबो, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। एमती सब मॉडिफिकेशन हेलानी, बट मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटी डिस्टेंस एजुकेशन टू दैट पर्टिकुलर लर्नर।
सो ये कौन हुए बेले बेले आम देखी था जोटा कहूली आमको सब लिखाई तो ऑफर गुड़ाक मिलता है पेपर रे देख कौन सी जगह तुम देख एडवर्टाइजमेंट रे ना ये आसतु केवल डिग्री नहीं जाए किसी करा पड़ोनी तो से तुमको चेक करार अच्छी वेदर इट इज यूजीसी एफिलिएटेड और नॉट वेदर इट इज एफिलिएटेड बाय डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड और ब्यूरो और नॉट ताकू तुमको देखा पड़ो जदि ठीक अच्छी से एफिलिएटेड होता तुम जापर हाँ ये मुझे इनभेस्ट करी पैसा देवी पाठ पढ़ी मो टाइम को भी इन्वेस्ट करी ना कौन हो एमती बहुत अनुष्ठान से माने कहते आम भी लोभरे हाँ डिग्री मिल जाए आम कम करके एडमिशन नहीं जाओ एवं तापरे बहुत हैरान हो किसी ना से माने सर्टिफिकेट दियंती सर्टिफिकेट देले भी सेटा कौन से काम को नाही इट्स नॉट मैम एफिलिएटेड केमिति हमें जानिबा से कॉलेज यूजीसी एफिलिएटेड और नॉट तुमको तांकर गोटे यूजीसी रो गोटे वेबसाइट अच्छी सेठी के जाई कि फेक यूनिवर्सिटी अलर्ट थाए फेक यूनिवर्सिटी कोटा सेटा से माने लिस्ट दे दी थांती राज्य रो माने स्टेट वाइज दे दी थांती हैला आ जदि भी यूजीसी दउची ता परे भी तुमको चेक करे अछि जे सेटा डिस्टेंस एजुकेशन रे आमे एटा करि परिबे कि नै बेले बेले तुमको कहबे किछि लोक जे हां एटा तमे पीएचडी टा कर दबो साइंस रे मेनली किछटा सब्जेक्ट अछि जोटा कि आगुरु चालुथिला साइंस रे डिस्टेंस एजुकेशन जेमति बरमपुर यूनिवर्सिटी एमाने सब करथिले तापर सेटा बंद हे गेला गोटे कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी ए सब बंद हे गेला कारण से मन देखले क्वालिटी ठीक रहू नै लोक मान को केवल सर्टिफिकेट गुड़ाक बिक्री करा जाउची तो सेठी किछि डाइल्यूशन होउची क्वालिटी रो तो से माने एफिलिएशन नै गेले डीएससी से टाइम रे कोन कला ताको एफिलिएशन आउ देला नै कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी सुनिथिबो आ बरमपुर यूनिवर्सिटी सेटा भी बंद हे गेला माने से माने एमएससी पढौतिले डिफरेंट सब्जेक्ट्स रे तो से माने जदी बरमपुर यूनिवर्सिटी अछि संखेडा फेक नु बरमपुर यूनिवर्सिटी अछि ये तुमको जदी कि कहइबो नै सेठी मु करे देबी सर्टिफिकेट दे देबी सेही वाला दे देबी आउ बट तमे देखियो जे एक्चुअली सेमती किछि आउ चालू नै किंतु तुमको कि जने जदी कहइबो मिछरे जे नै चालुची मु करे देबी तमे दे दियो पैसा तो तमे दे दो एडमिशन कर दो फेक सर्टिफिकेट भी दे देबे तमे जानि भी पारिबोनी सो डिफरेंट काउंसिल्स गुडाक रहउची जोटा कि एई भलिया डाइल्यूशन जोटा रहउची एजुकेशन लेवल रे ताकू मध्ये से माने चेक करूचंती सो सेटा प्रथमे जे कोनसे डिस्टेंस एजुकेशन तमे करूच ना लेखौच प्रथमे देखिबो सेटा डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बा एबे जोटा है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो द्वारा सेटा अप्रूव्ड कि नुह तापर जे कि तमे जे कोनसी प्रोग्राम रे तमे एडमिशन नेबा कथा तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल इग्नोर गोटे दीजिटा कोन तार सब फंक्शन रही से विषय प्रमोशन कोऑर्डिनेशन डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिलीज ऑफ ग्रांट्स टू ओपन यूनिवर्सिटीज एंड कॉरेस्पोंडेंस कोर्स इंस्टीट्यूशन अदर फंक्शन हमर ओडिसा रे गोटे थिला जो ओपन यूनिवर्सिटी एटा भी बंद हे गेला कोन पय बंद हे गेला कि कहबो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ओडिसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैम संबलपुर हां बंद हेनी बट किछिटा प्रोग्राम से माने आउ माने अछि किंतु किछि एडमिशन एतर को बाहर नहीं सेटा मैं माने बंद करछन एथे पे माने ठीक से टीचर माने रिक्रूटमेंट हे पारुनी तदन टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी सही के माने इंप्रूवमेंट होउनी तो पिला माने भी सैटिस्फाइड नुहंती जो टीचर माने भी पढौछंती तापे हमर क्लासरूम पे जति जो से माने ठीक से रूम नहीं लाइन नहीं तन सब बहुत प्रॉब्लम है हां सेटा हलो मेन प्रॉब्लम तो समय देखले क्वालिटी डाइल्यूट होउची से एक्सपर्ट ग्रुप आइसले ना करू से माने सब देखि कि ना ताकू डिस्क्वालिफाई कर दिले सो दे कहले ना एटा जति भी दिया होउची मटेरियल हो बा तार टीचर्स नाहंती विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम रहउची तो सेटा गोटे सैटिस्फैक्टरी डिस्टेंस एजुकेशन हेई परिबो नाही तो तार पछरे सेटा खोली पर बंद तो हेनी माने बट बे आउ एडमिशन सेटा करा जाबे सो दे आर मॉनिटरिंग द क्वालिटी आउ गोटे रहला तमरा एसोसिएशन of Indian University. So different universities they are combining together और आमे कहि परिबा जोटा गोटे एसोसिएशन से माने करचंदी सब यूनिवर्सिटी रो गोटे कंबाइनली सेटा कोन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज आउ एटा मेनली 1924 ए आइडिया टा आसीथिला आउ तापरे ताकू मध्य हमर एबे भी एआईयू चालुची एआईयू तमे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम सब करूची सेमिनार हला कॉन्फ्रेंस हला पब्लिकेशन जोटे यूनिवर्सिटी न्यूज आसे पब्लिकेशन हां एवडा को सब मध्य एआईयू रो काम सो दे आर आल्सो वर्किंग फॉर द क्वालिटी डेवलपमेंट एट द हायर एजुकेशन लेवल
So what are those objectives? Mutually, how can we grow? Different universities, different faculty members of university, they combine together, they also interact with each other, and they decide different plan, they implement different ideas, and their main function is to act as a liaison between the universities and the government. Government को ସେମାନେ ତାଙ୍କର demand university ଗୁଡାକ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି, and to act as a representative of universities of India. ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ'ଣ ମୋଟୋ ରହିଛି ବା କ'ଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି, and they also provide different ideas for improving the standard of instruction, examination, research, textbooks, scholarly publication, library organization, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କେମିତି improvement ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି. So it's a kind of association. अच्छा, न्यूपा विषय शुणिथिबो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. एटा वर्तमान न्यूपा भी नाही, बहिरे तमरा देया हिची, निएपा हे गलानी. नेशनल इंस्टीट्यूट केतळे नेशनल इंस्टीट्यूट थिला, निएपा थिला, पुन न्यूपा हला, पुन निपा ताकू करचोंदी. तो से जा भी हो न्यूपा बा निएपा, सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन. कोन हेइथिबो को यार मेन एक्टिविटी ये कहबो को? मैम हमरो जतक किछि प्लानिंग होउछि, किछि एडमिनिस्ट्रेशन ने किछि भी किछि डिसीजन ने जाउछि यूनिवर्सिटी मानक मानकरे, सेठी पे सेटा किछि चलता प्लानिंग आ किछि डिसीजन नवा पे किछि मीटिंग हेइ थाय, किछि सेमिनार हेइ थाय. कि ट्रेनिंग भी दिया जाउछि, ता सहित विभिन्न टीचिंग रिसर्च दिया जाउछि, एडवाइस दिया जाउछि केमति एडमिनिस्ट्रेशन हेइ परिबो, केमति पॉलिसी प्लानिंग हेइ परिबो. एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स मानकु मध्य डिफरेंट डायरेक्शन दिया जाय थाय, से माने केमति भलो से डिसेंट्रलाइज्ड वे रे एडमिनिस्ट्रेशन करि परिबे, कोन ताकर असुविधा होउछि, रिसर्च करा जाय थाय कोन असुविधा होउछि एडमिनिस्ट्रेशन रे. कारण एडमिनिस्ट्रेशन जदि भलो से न रहला तो हमें कोन से एग्जीक्यूट करि परिबानी. तो सेहि पय they are also organizing different training for the grassroots level stakeholders. ताको मानका पाई मध्य किछि ट्रेनिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंस मध्य ऑर्गेनाइज करथांती. प्लस सेठी मध्य विभिन्न प्रकार कोर्स गुडा अछि. नेशनल यूनिवर्सिटी बा इंस्टीट्यूट कहबा सेठी मध्य किछि कोर्स रहिछि, जेमति रिसर्च कोर्स, पीएचडी, आउ ता सहित मध्य किछि कोर्स मध्य तमे ता वेबसाइट को जाय कि म देखि परिबा एडमिशन होउछि सेठी. मास्टर डिग्री लेवल रो बा कोर्स रिसर्च लेवल रो किछि एक्टिविटीज सेठी मते टीचर्स माने रहिछि, एंती डिफरेंट डिपार्टमेंट्स गुडा रहिछि. तो मेन फोकस रहिछि एडमिनिस्ट्रेशन केमति, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को केमति हमें भलो करि परिबा, मैनेजमेंट केमति भलो हेइ परिबो, ता पई एटा मेन लीडरशिप नै थाय. एजुकेशनल पॉलिसी प्लानिंग और मैनेजमेंट केमति हेइ परिबो भलो. आ लास्ट को तमरा ला एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, National Council of Educational Research and Training. NCERT, it was established in the year 1961, and it functions as a resource center in the field of school education and teacher education. Mainly दीटा काम तार रहिछि, स्कूल एजुकेशन केमति हमें भलो क्वालिटी रो देई परिबा, आउ टीचर एजुकेशन केमति भलो हेई परिबो. सो एनसीईआरटी रो मेन ऑफिस भी अछि दिल्ली रे, आउ न्यूपा भी दिल्ली रे अछि, एनसीईआरटी भी दिल्ली रे. यार मेन काम तो मेन कहली तुमको जे टीचर ट्रेनिंग एंड स्कूल एजुकेशन डेवलपमेंट का ये करता है, प्लस रिसर्च वर्क मध्य करता है, डिफरेंट सर्वे मध्य करा जाय था. सो ये ऑब्जेक्टिव्स गुडा का देइची, रिसर्च टेक्स्ट बुक जेमति एनसीईआरटी हम स्टेट लेवल रे रहिची, सेमति नेशनल लेवल रे एनसीईआरटी बस फंक्शन सब समान. टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन, करिकुलम प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन रिफॉर्म, रिसर्च एगुडा का सब, प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे, प्रोजेक्ट वर्क एगुडा का मध्य हेइथा. रिसोर्स प्रिपरेशन जेमति हमर टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रिपरेशन एगुडा का मध्य काम करथे. आउ मेनली टीचर एजुकेशन रा डिपार्टमेंट जोडा रहिछि, आरआई गुडा को सुनिथिबो, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन. सो दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग बीएड, एमएड, एमफिल, पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर आवर स्टूडेंट्स. सेठी मध्य आरआई गुडा को जोटा होछि सेटा एनसीईआरटी रो गोटे डिपार्टमेंट बा गोटे ऑर्गेनाइजेशन तारी अंडर रे काम करथाय. हम भुवनेश्वर रे मध्य रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अछि, सुनिथिबो.
सेमती अलगा स्टेट गुड़ाकर रही जोटा मेन फंक्शन जोटा कि काम करता एनसीईआरटी अंडर रे ना सो इट्स मेन ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ फंक्शन ଆରଆଇ ରେ ବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଏଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ। हम 4 4 ବର୍ଷିଆ। इयर इंटीग्रेटेड बीएड रही सिटी हैला ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ +2 करे सिटी एडमिशन नहीं पारिबो तो से माने मते टीचर ट्रेनिंग जोटा कहूची एनसीईआरटी रे अंडर रे आरआई गुडा रही आरआई रे मध्य तमरा बीएड एमएड एगुडा सब एमफिल एगुडा कोर्स मध्य करि परिबो जोटा कि टीचर भलो टीचर आमे तयारी करि परिबो सिटी तो टीचर एजुकेशन मध्य सिटी रहूची एंड मेन फंक्शन इज टू provide different advice to state level central level on mainly central government to assist different states in policy formulation implementation and evaluation of school education to run innovative service and in service teacher education program the different type of teacher education program the in service teacher education program गुडा मध्य तार रही प्री सर्विस रे बीएड एमएड एमफिल एगुडा सब दिया होची पीएचडी एगुडा सब करा होची सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन लेवल रे मते डिफरेंट एडवाइस मते दिया होची पॉलिसी फॉर्मुलेशन केमती करा जिवो सेंट्रल लेवल रे धरा कुआ गला बे एनईपी एमती रही तो स्टेट लेवल कोन करि परिबो तो सेइथरे मध्य एनसीईआरटी हेल्प करथा आ डिफरेंट आरआई रो जो गुडा रही छथि से माने मध्य तार टीचर्स माने प्रोफेसर्स माने हसे के सहाय्य करथांती सो फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी so different international bodies are also there it royal state level national level local level bodies some international bodies are also there UNESCO UNESCO समस्त सुनिथिबो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यार मध्य रही so it is founded in the year 1945 main function is to promote collaboration among nation through education science and culture so education को main focus करिछि आ गोटे ऑर्गेनाइजेशन हला यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड so it is also established in the year 1946 it is also providing fund to different nations for the benefit of children school education आ गोटे रहला यूएनडीपी सो आमे जो डिस्कशन करथि डिफरेंट प्रोजेक्ट लाइक जो रहला महिला सामक्ष्य आउ लोक जुम्बिस तमे सुनुथुव आमे डिस्कशन करते यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम तो सेइथरे मध्य किछि फंड से माने देई थांती डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज मान को जो माने कि पुअर जो माने अफोर्ड करि परिबेनी तो सेमान को मध्य यूएनडीपी एडवोकेट किछि एडवाइस मध्य देई थाए ता सहित किछि फंड मध्य देई थाए सो मेन यूएनडीपी रो मेन रहला ह्यूमन राइट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड एम्पावरमेंट ऑफ ह्यूमन राइट केमती सब प्रोटेक्टेड ही रहइबो माने वुमेन एजुकेशन केमती हेई पारिबो आउ इट इज आल्सो publishes human development report केमती आमे ह्यूमन डेवलपमेंट करि परिबा कंट्रीज रे जोटी माने ह्यूमन राइट को वायोलेशन करा जाउची सेठी केमती आमे एजुकेशन थ्रू रे से मन को अपलिफ्ट करि परिबा से सब विषय मध्य डिस्कशन कराइ थाए the basic objective of UNDP is to help poorer nations develop their human and natural resources more fully सेमान को केमती आमे हेल्प करि परिबा सो यूएनडीपी रो सेटा मेन फंक्शन रही थाए to provide expert advice training and grant support to developing countries पुअर कंट्रीज को भी हमें से यूएनडीपी हेल्प करता है ता सहित मध्य एक्सपर्ट जो माने कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग एडवाइस ट्रेनिंग एंड ग्रांट्स एगुडा को मध्य देई थाए वर्ल्ड बैंक it is founded in the year 1944 it is the largest sources of डेवलपमेंट असिस्टेंट कि वर्ल्ड बैंक रु मध्य हमें किछि फंड पाई थाउ कंट्रीज मान को दिया है जाई थाए এবং সেইথরে মধ্য তাଙ୍କର এডুকেশন রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস করা যাই থাকে focusing on main functions are focusing on social development investing in people particularly through basic health and education এগুডা করে মধ্য
protecting the environment, education facilities केमती दियाजियो सेति मध्य वर्ल्ड बैंक काम करथे। आउ गोटे रही तमरा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। Commonwealth of Learning it's an intergovernmental organization which was founded in the year 1989 by Commonwealth heads of government in the Vancouver, Canada. It's a Commonwealth of Learning. It is also working for the learners through open learning, through distance education, knowledge, resources, technology. Maybe Commonwealth Learning विभिन्न माने तमे देखिबो ट्रेनिंग गुडा को सब टीचर्स मान को बा प्रोफेसर्स मान को सब दिया है थे डिफरेंट एस्पेक्ट्स रे। So you can go through it. Now moving to another unit, resource management for education at macro level. So एथरे भी बहुत गुडे कथा दिया हिची देखिबो बही रे। So what do you mean by resource? कौन बुझा रिसोर्स माने? रिसोर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कौन? तापरे आमे जिबा रिसोर्स मैनेजमेंट को। मैम रिसोर्स कहले जे कोनोसी ऑब्जेक्ट किछवा थिंग्स हे गला जहा कि हम एजुकेशन डेवलपमेंट रे हेल्प कर रिसोर्स में हम स्टूडेंट मानको को भी रिसोर्स कहि परिबा जहा कि हमको हेल्प करसुंदी एजुकेशन में। Yes, some type of things those are helping us to move ahead in the field of education. So the word resource refers to any supply that will meet the need to the stock or reserve, which one could draw upon that necessary when necessary. जर दरकार थिबो किछि काम रे लागिबो एवं किछि हेल्प करि परबो। So resources in education thus refers to all those assets such as contingency, equipment, माने contingency माने किछि fund, किछि finance, equipments, instructional material, personnel, buildings, finance, and ideas which have the potential to be used in the process of education for attaining certain goals. So resources are very important for management of education system. So management is mostly concerned with the comprehensive effort of direct guide and integrate human efforts. So in order to attain some goal, we have to use some resources, some equipments, and by that only we can achieve our goal. So resource is very important in the field of education. So what do you mean by resource management? So in short, tum bohi re bhi dechi, resource management has to do with maximum exploitation of all available resources for the attainment of educational goal. Okay, so how can we manage or how can we use all these resources so that we can attain the educational goals easily? केमिति भाबरे आमे यूज करिबा रिसोर्सेस गुडाको so that we can achieve our objectives. Okay, ए सब विषय रे देछि। Any other idea about resource management कि कहि परिबो? मैम रिसोर्स मैनेजमेंट कहले हमर जो रिसोर्स अछि केमिति ताको ठीक भाबरे यूटिलाइज करबा केमिति गोटे टाइम बाउंड पिते गोटे स्टेट कर केमिति ताको ठीक भाबरे अति परिपा अंडर आउटकम। Okay, so resource management is very important in the field of education so that we can reduce the gap, we can reduce wastage, we can reduce wastage of time, wastage of material in the field of education. केमिति सब जिंस थिबो किंतु हमको अधिक खर्च एक्सपेंडिचर देबाकू पडुथबो हां so that it will be very difficult for us to organize our educational practices. अच्छा एटा देखो here in this diagram also you can find out resource management techniques जदि भी बहिने नाही so first is resource allocation, resource labeling, allocate करा गला तुमको किछ दिया गला ताकू तमे सजै की लेबलिंग माने सेटा कोउटा कोन हां ताकू मध्ये रखिबो
रिसोर्स फोरकास्टिंग कोठी मु ताकू रिसोर्स टाकू यूज करि परिबी एवं एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन केमती ताकू मु यूज करिबी so different resource management techniques are there whenever you are working in the field of education you have to also go through it and you can utilize all these resources with a very useful technique of resource management techniques ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ତାକୁ ପ୍ରଥମ को ଦିଆଗଲା ତାକୁ ଲେବଲ କରିକି ସଜେଇକି ରଖିବା ଏବଂ କୋଉଠି ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଟା ୟୁଜ କରିବି ଯେମିତି କି ତମେ ମନେ ପକାଅ ଯଦି କି ସ୍କୁଲ ଥିବ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ହୋଉଛି सो समस्त को दायित्व दिया गला समस्ते को काम करिवो कोन सो मटेरियल हम पाखरे अछि को प्रकार रो इक्विपमेंट्स गुडा को दरकार पडुची ताकू मु को टाइम रे यूज करि परिबी सो दैट मोर मेन गोल हला कोन गोटे एनुअल फंक्शन टा भलो से हमरो हेई परिबो तो केते लोक लागि थांदी केते टीचर्स मन को सब दायित्व दे जैते के कोन करिवो हां तो सेटा मध्य गोटे एग्जांपल हमें कहि परिबा हमर जति के एक्जिस्टिंग रिसोर्स अछि हमर बजेट रे केमती गोटे भलो फंक्शन हमें करि परिबा सेटा मध्य गोटे रिसोर्स मैनेजमेंट रो गोटे एग्जांपल हमें देई परिबा एठी सो मैक्रो लेवल रे कोन रिसोर्स मैनेजमेंट एट द सेंट्रल लेवल जोटा मैक्रो माने कोन बॉड माने हायर लेवल रे तो कोटा गोटेला सेंट्रल लेवल रे रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टेट लेवल आ गोटेला कम्युनिटी लेवल रे से विषय रे बही रे देइची सो सेंट्रल लेवल रे केमती होउची देखो गोटे डायग्राम बही रे मते देइची प्रथम एला कोन देखुचो एमएचआरडी MHRD रही ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम गोटे मिनिस्टर मध्य रही देन एजुकेशनल एडवाइजर एजुकेशनल सेक्रेटरी देन जॉइंट एडवाइजर जॉइंट सेक्रेटरी एंड सेंट्रल से जॉइंट लेवल सेक्रेटरी को अंडर रे सब रही गला सेंट्रल CABE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICT UGC NCT NCERT central planning groups various other bodies joint secretary under it सब रहला so they are working for the benefit of our central level I mean management ए माने सब central level management करि थांदी MHRD under रे जने मिनिस्टर रहिले से मिनिस्टर को अंडर एजुकेशन सेक्रेटरी दी MHRD रो जेमती दीटा डिपार्टमेंट गोटे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन से बढिया रहिची से मानकर सब से देखिवो तार स्ट्रक्चर टा केते सेक्रेटरी केते डायरेक्टरेट इरो सब रही छि सिटी गोटे शॉर्ट फॉर्म तम मान को पाई आउटला रिसोर्स मैनेजमेंट एट द स्टेट लेवल के करिवे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एजुकेशन सेक्रेटरी हमर अछंती सेक्रेटरी अछंती तांको अंडर डायरेक्टरेट माने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डेप्यूटी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एंड तुलक एजुकेशन ऑफिसर जोटा गोटे तुलक जोटा तालुक क्लस्टर तालुक रिसोर्स एजुकेशन क्लस्टर रिसोर्स हां BRCC CRCC सब रही तापर तो गोटे मिनिस्ट्री लेवल रु तळकु गले क्लस्टर लेवल पर्यंत केमती एडी हमर रिसोर्स मैनेजमेंट होची से माने ही रिस्पांसिबल सब रिसोर्स को केमती सो दे आर आल्सो एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन भी करछंती मैनेज भी करछंती एग्जीक्यूशन भी करछंती so they are responsible for that रिसोर्स मैनेजमेंट एट द कम्युनिटी लेवल केमती हे था जोटा कि कम्युनिटी रो डिफरेंट टाइप रो मेंबर्स माने रही थांती जंती PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन MTA जम भी जो रहला विलेज एजुकेशन कमिटी एमने सब रहले विद इन द ड्यूटी ऑफ केयर कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट आमे करि परिबा जोटा कि हमर प्राइवेट बेनिफिट बियॉन्ड रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हमर रही छी पब्लिक बेनिफिट सबुर को देखि कि आमे विथ केयर वी कैन मैनेज द कम्युनिटी तो रिसोर्स मैनेजमेंट के रहले सब कम्युनिटी लेवल रे PC रहला देन PTA MTA स्कूल जो रही छी कमिटी गुडा कोन स्कूल ले सब को SMC कमिटी SMDC MSNC SMDC they are also SMDC कोन फुल फॉर्म के कहबो मैम स्कूल मैनेजमेंट School management स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमिटी School management and development committee. PTM MTM yes so same माने मध्य रहिले so say they are representing their community members and with that also they are trying to manage the institution out रही कोन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD so सेटा मध्य हमरो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पाई मध्य गोटे रही ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट इट प्लेसेस ए प्राइमरी प्रीमियम एंड द
on the dignity and potential of people and insist that people need to be treated as human being, not merely as factors of production. It lays stress on trust, lays stress on trust in the integrity of people. ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା କେମିତି ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ এটা মধ্যে রয়েছে ଗୋଟେ। So teacher empowerment. So at this level, whenever we are saying that resource management, where we have to empower our teacher, how can we empower your teacher or our teacher? The teacher माने ही जदि empowered हेबे, learned हेबे, educated हेबे, then only we can also bring quality to our education system. So for that purpose, we are providing various pre-service, in-service teacher education strategies to our student teacher as well as to our teachers. So different agencies are there. को माने এটা সিটি ହେଲା, সিটি কলেজ অফ টিচর এডুকেশন এটা রয়েছে, কলেজ অফ টিচর এডুকেশন जो बीएड ट्रेनिंग कॉलेज गुड़ाक, आईएएससी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन जेमती राधानाथ ट्रेनिंग कॉलेज रही ताको आईएएससी कहगला, जोटा टिकी बड़ ट्रेनिंग कॉलेज गुड़ाक जो बीएड एमएड एमफिल एडा सब पढ़ा होची। सेकेंडरी लेवल टीचर एजुकेशन करा होची, प्री सर्विस एंड इन सर्विस बोथ, प्री सर्विस एजुकेशन भी दिया होची, इन सर्विस भी ट्रेनिंग दिया होची। जेमती डायरेक्ट एलिमेंटरी लेवल बा प्राइमरी स्कूल टीचर्स मान को मेनली ट्रेनिंग दिया जाय था। डाइट फुल फॉर्म कोन ये कहबो मैम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एजुकेशन ट्रेनिंग सब डिस्ट्रिक्ट रे गोटे रही जोटा ट्रेनिंग होची प्री सर्विस इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्राइमरी लेवल पर्यंत। आ ता सहित जोटा सेकेंडरी लेवल रे रहिले टीचर्स माने तर तमे बीएड करलो, बीएड परे तमे सेकेंडरी लेवल रे पाठ हाई स्कूल रे पढेलो, देन यू विल आल्सो गेट सम ट्रेनिंग। आउ बीएड ट्रेनिंग जदो रहला प्री सर्विस, बीएड को कहला प्री सर्विस माने सर्विस हला आगरु बीएड पढुछ तो प्री सर्विस हमर सिटी आईएससी गुडा के बीएड एमएड सब दिया जाउ तो प्री सर्विस। तो सेहित पई रोल्स ऑफ डिफरेंट एजेंसीज को मन रहले सिटी आईएससी एंड डाइट्स ना, डाइट गुडा को तमरो आउ रही तमरो सिटी स्कूल गुडा जो तमरो रही जोटी मध्य छोट छोट पिला को पढ़िया पई नर्सरी टीचर ट्रेनिंग स्कूल हला, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स गुडा हला, नाउ दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द टीचर्स, सेठी मध्य किछ ट्रेनिंग दिया जाउची। अच्छा फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट कोन मैम डाउट वर्ड थला हां मैम जो परवर्ती स्लाइड रे देखले जे मैम से लिखा है सिटी मैम एटा को लेवल रे कार्यकारी करछि नहीं तो डायरेक्ट हेला प्राइमरी टीचर ट्रेन जैसे हम भी जो बीएड कॉलेज गुडा को सिटी कहा जाउची, जेटा एनईपी 2020 पर सॉरी एनईपी 1986 पर बीएड ट्रेनिंग कॉलेज गुडा को जो रही जेमते हम अनुगुण ट्रेनिंग कॉलेज गुटे रही तो से नलिन देवी ट्रेनिंग कॉलेज रही तो से माने हले सिटी सिटी माने हम अनुगुण रे जेमती हला कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन हला सेटा रहिला कोन मैम जो मैम सिटी स्कूल उडा कोथरे जाउचंती जो सिटी स्कूल जेटा डाइट अंडर रो थाए सेटा जाउची हमरो एसीआईटी अंडर रे से माने डायरेक्ट लेवल एसीआईटी अंडर रहउची। सिटी स्कूल उडा को जेमती हमरो सेकेंडरी स्कूल उडा को रहउची सेमती सिटी स्कूल उडा को रहउची बा सिटी एलिमेंटरी टीचर ट्रेनिंग उडा से माने एडमिनिस्ट्रेशन होउचंती मेनली एसीआईटी द्वारा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एसीआईटी ताकू कंट्रोल करची, ताकर जहां भी टीचर्स रिक्रूटमेंट हो बा जहां भी रहउची एसीआईटी कंट्रोल करची, किंतु सीटीई आउ आईएससी एटा हायर एजुकेशन को पळे जाईची जोटा बीएड ट्रेनिंग कॉलेज गुडा को हला से गुडा को सब तमरो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बुझुची ता कथा जति के हमरो टीचर पिला मान कर एनरोलमेंट हला कि टीचर्स मान कर रिक्रूटमेंट हला ताकर ताकू एडमिनिस्ट्रेशन करिया पई जति के तमरो पैसा पत्र दरमा जहां भी रहउची सेटा सब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बुझुची, किंतु जोटा डाइट रहिची हला जोटा हमर एलिमेंटरी टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन गुडा को बीआरसी सीआरसीसी तापरे तुमरो जो रहिला ट्रेनिंग स्कूल गुडा को जोटा रहिची तम कहूती जोटा इटी एलिमेंटरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गुडा को सेटा मेनली डायरेक्टली इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्कूल मास डिपार्टमेंट जोटा रहिची तार अंडर रे एसीआईटी ताको स्कूल एजुकेशन गोटे रहिची टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट रहिची तो ताको कंट्रोल करथाय। तो एसीआईटी अंडर रे से माने मेनली काम करथांती ताकर गोटे डिपार्टमेंट अछि डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन
हाँ से माने सेई ता अंडर रे रही थांती एसीआरटी मिनिस्ट्री भी अलगा स्कूल आउ मास एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर रे ए जो प्राइमरी स्कूल टीचर ट्रेनिंग आउ डाइट एगुडा को आसुची हायर एजुकेशन अंडर रे सिटी आउ आईएससी गुडा को आसुची जो माने सेकेंडरी टीचर एजुकेशन को दउछथि बीएड आउ एमएड ट्रेनिंग दिया होची बुझियला आज्ञा मैम बुझेला मैम आ सिटी आ आईएएससी भितर किछि कोन किछि डिफरेंस अछि कि कोन कोन ता भितर अछि सिटी टिके कम तार फाइनेंशियल बेनिफिट कम पाइबो रिसर्च तार कम होबो आउ सेठी कम जेमति कि गोटे कोर्स एमफिल हमर नाही सिटी गुडा करे किंतु मैम पीएचडी एमफिल तो पे होउनी एनपी जेबट लागु होला एमफिल को बंद कर दे आगुरु थिला आगुरु एबे सिना होय जे एबे 2023 मसे एबे सिना हला किंतु एमफिल अछि पीएचडी रो रिसर्च काम बेसी आईएससी रे हेई थाए हला सिटी रे कम हेई थाए आउ बेले बेले सिटी रे कम सीट्स उडा थाए आईएससी ऑर्गेनाइजेशन राजारा ट्रेनिंग कॉलेज जोडा को सब बेसी सीट्स उडा थाए हला संबलपुर आईएससी गोटे अछि राजारा ट्रेनिंग कॉलेज कटक जोटा अछि आईएससी सेटा बेटे बड़ अनुष्ठान ताकर टीचर मान को संख्या अधिक ताकर बेसी फंड ताको मिली थाए एज कंपैरिजन टू सिटी ताकर बेसी लैबोरेटरी आउ ताकर बेसी इंफ्रास्ट्रक्चर अछि हां आउ सेडी नोटे बेसी रिसर्च काम बेसी हेई थाए से माने बेसी स्कूल एजुकेशन बा टीचर एजुकेशन रिलेटेड काम बेसी करतांदी ताकर प्रोफेसर माने बेसी अछति आम अनुष्ठान रे कम प्रोफेसर ताकर अधिक प्रोफेसर ता सेमति टिके डिफरेंस होई छी किंतु मेनली आईएससी रे टिके बेसी ब्रॉडर आ बेसी तार बेसी पावर आ सिटी रे अपेक्षा हला आज्ञा मैम एथि रिसर्च ऊपर बेसी फोकस करा जाय हां हां इसेति बा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन एडवांस स्टडीज तो से माने बेसी तांकर बेसी प्रोजेक्ट काम करथांती प्लस बेसी तांकर काम गुडी को अधिक से माने अधिक स्कूल को नेकरी बेसी प्रोजेक्ट करथांती बेसी तांकर टीचर संख्या भी अधिका प्रोफेसर संख्या भी अधिका एवं बेसी कैपेसिटी तांकर रही छि सीट्स रे मध्ये हला थैंक यू मैम मैडम मोर ग्रेजुएशन नो डाउट थला हो अच्छा तापर रहला फिजिकल रिसोर्स मैनेजमेंट सो फिजिकल रिसोर्स कोन व्हाट आर द फिजिकल रिसोर्सेस इन एजुकेशन फिजिकल रिसोर्स मींस हां मैम जहा को जे फिजिकल रिसोर्स कहले हमर बेंच टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमर किछि इक्विपमेंट सेटा सब फिजिकल रिसोर्स रे पड़ेबो लैबोरेटरी सोशल साइंस रूम स्कूल प्लेग्राउंड आर्ट क्राफ्ट रूम लाइब्रेरी स्कूल ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस कंप्यूटर रूम मीडिया यूनिट एनसीसी रूम सब गुडा कर आसीला तमर फिजिकल बिल्डिंग हां ये गुडा को सब so designing building for optimum use of learning resources केमते हम ताको बेसी यूज करि परिबा कम जगह रे भी बेसी केमते हमें पिला को फैसिलिटी देई परिबा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस एटा मध्ये रही छी तापरेला मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस सो फाइनेंशियल रिसोर्सेस भी बेसी दी प्रकार तीन प्रकार रिसोर्स जोडा ह्यूमन रिसोर्स फिजिकल रिसोर्स आउट रहला तमरो फाइनेंशियल रिसोर्स कोन मनी पैसा ताको केमिति हमें यूज करि परियो तार मध्ये मैनेजमेंट हमकु सिखिबार अछि तो बजेट फॉर्मुलेशन बजेट हमें करथाउ सब वर्ष स्कूल रे बा जेमति हमें देश रे बजेट करथाउ सेमति हमें स्कूल बा इंस्टीट्यूशन बा कॉलेज रे मध्ये गोटे बजेट एनुअल बजेट तयारी हेता सो व्हाट डू यू मीन बाय बजेट मैम बजेट रे गला कोनोसी गोटे गोटे वर्क को भलो भाबरे मैनेजमेंट करिया पे एटा ठीक भाबरे कार्यटी को संपूर्ण करिया पे हम किछि प्लानिंग करथाउ ता पे किछि फंड देथाउ सेटा को को जाय बजेट रेडी करथाउ एनी अदर्स आंसर मैम नॉर्मली बजेट कहले माने गोटे ईयर रे गोटे फाइनेंशियल ईयर रे केते कोन खर्च होउची तारे प्रॉपर स्टेटमेंट ता को रिकॉर्ड करिया को बजेट कहले माने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट it's a plan it's a tentative plan of annual expenditure of for the institution तो गोटे वर्ष रे हमें केते खर्च करियो तार गोटे एनुअल प्लान हमें करि थाउ जेमति कि प्लान हमर घरे मध्ये रही था जे केते खर्च करिया गोटे मास रे केते खर्च करिबा बस नेशनल लेवल रे बजेट हेई था अधिवेशन गुडा को बसी था स्टेट लेवल रे आ नेशनल लेवल रे so that it can also influence our economical consideration को नेकी ना हमें गोटे बजेट मध्ये annually तयारी करथाउ so management of financial resources these are also very important for educational operation you can find budget formulation
So it is also prepared in the institutional budget, annual institutional budget. It is also prepared by the administrators. So this budget can be also prepared at the central level re ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥାଉ କେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଧର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହେଲା କି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆନୁଆଲି କେତେ କୋଟିର ଆମେ କରିବା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ ଦିଆ ହବ କେତେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହବ ତାର ମଧ୍ୟ ବଜେଟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ so budget is very important because with this budget or a financial input only we can run or we can execute different types of educational programs. So for that purpose at the central level some types of जेतडा हमें बनौचे बजेट बनौचे किछि परसेंटेज एतिकी परसेंट हमें दबा एजुकेशन पाई एतिकी परसेंट हेल्थ पाई सेमती रही थाए एवं ताकू देखि किना केते हमें एनुअल इनकम रो केते पार्ट हमें दउचे सब वर्ष तार गोटे हिसाब रही थाए. So budget formulation for the taluk or district level. So district level रे केते प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रो जति की इनकम रहउची बा जति की पाउछन्ती फंड तार केते परसेंटेज एजुकेशनल बेनिफिट पाई जीवो हां तो स्टेट लेवल गोटे स्टेट रे मध्ये गोटे बजेट हेई थाए जेमति सेंट्रल लेवल रे होउची तो स्टेट लेवल रे मध्ये अधिवेशन बसते जे शिक्षा में हमें केते देबा एनुअली सेटा मध्ये डिस्कशन करा जाई थाए तो सेतिके आमे शिक्षा पई दिया गला तो सही अनुसार केतेटा प्रोजेक्ट आसीबो केतेटा कार्यक्रम चलीबो एवं एनुअली आमे केतिकी खर्च करिबा एजुकेशन पई तार मध्ये गोटे बजेट तयारी हिथाय तापरला तमरो सैलरी ऑफ टीचर्स केते सैलरी आमे दबा टीचर्स को हां तार मध्ये सेटा मध्ये फिक्स करा जाई थाय केते क देले हमरो ठीक से आमे ताकू कोन सैटिस्फैक्शन बा गोटे प्रोफेशनल सैटिस्फैक्शन आमे देई परिबा जेटा सब वर्ष कम दउछन्ती सेति पई बहुत गुडे स्ट्राइक भी होउची एइटे माने भूल आटो शिक्षक मानको ठीक से पेमेंट मिलुनी निश्चित भाबरे सेटा बजेट रे ही से माने कम करछन्ती आ किंतु रिक्रूटमेंट कला आलको जति की दबा कते दउ नाहंती रिक्रूटमेंट रे दरकार रोजी सेही अनुसार एनुअल बजेट अनुसार रिक्रूटमेंट भी होउची रिक्रूटमेंट केते दिया होउची केते हबो एवं गोटे वर्ष पई केते दिया हबो एवं सेहितरे केते ताकुर फिक्स करा जिवो सेटा मध्ये गोटे चिंता करिया कथा सेटा से माने सेंट्रल लेवल रे तो प्राय तो सब स्कूल गुडा को भलो पाउछन्ती किंतु स्टेट लेवल रे सेटा निश्चित भाव रे कमई दउछन्ती सेते पई विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम होउची जोटा कि हम शिक्षा व्यवस्था रे मु कहबी स्पेशली ओडिसा एइतरे निश्चित भाव रे किछि फॉल्ट रहउची. अच्छा आउ गोटे तमरो यूनिट रहिची प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन so you know that term evaluation what do you mean by that evaluation term janithibo what do you mean by that what do you mean by evaluation ma'am evaluation is one type of judgment decision or summative assessment summative 1 summative 2 in this type of evaluation कोनोसी हमकु छुआर फीडबैक दबा पई मिलेनी खाली आमे हमरो डिसिजन दउ बा तार रिजल्ट पाउ सेटा हो सो इवैल्यूएशन गले क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्लस वैल्यू जजमेंट वैल्यू जजमेंट हमें कहि परिया सो इंटरप्रिटेशन करिकुलर एंड आल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर आल्सो एक्टिविटीज calculating the quality importance amount or value of something so one definition is there assessment is known as evaluation मैम असेसमेंट ता इवैल्यूएशन हबोनी असेसमेंट मैम असेसमेंट तो ଗୋଟେ प्रोसेस ता ଗୋଟେ से पार्ट करे असेसमेंट इवैल्यूएशन इट इज नॉट डिफरेंट इवैल्यूएशन असेसमेंट हेल्प करे इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन एटा कोइ परिबे yes हां एटा हम कोइ परिबे so evaluation is the systematic collection and interpretation of evidence leading as part of process to judgment of value with a view of action so value judgment जोडा कहउदलो judgment of value interpretation of evidence हां कोन हमें पाइले कोन तार परिवर्तन हेची पाठ पढला परे कोन तार केते मात्रा से अचीव करिछि से सब जिंस हमें कहि परिबा so whenever we are going for this program evaluation so in this operational term that hame कहउचे educational context रे so different programs are running जेमति हमें पढिले operational concerns गुडा को
एजुकेशनल एक्टिविटीज रे बा एजुकेशनल प्रैक्टिस रे ऑपरेशनल प्रैक्टिस रे हम जरे करूछ डिफरेंट प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन जेंति सर्व शिक्षा अभियान हला एमडीएम हला ताकू हमको इवैल्यूएट करियर अछि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एज एन मैनेजर एज एन एजुकेशनलिस्ट एक्सपर्ट सो एइथरे कोन होची एइ चैप्टर रे हमें पिलांकर असेसमेंट इवैल्यूएशन कथा पढिबा नै एइ चैप्टर रे मने रखिता दिस इज अ चैप्टर फॉर कोन प्रोग्राम इवैल्यूएशन प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन ओके बीएड करथिबो को माने सो इवैल्यूएशन असेसमेंट पढिछ मु जानि पाउची किंतु सेटा अलगा सेटा हेला पिल्लार डेवलपमेंट केते होची किंतु एई रे जतले हमें ऑपरेशनल मेजर्स गुडा को करूचे ऑपरेशनल एक्टिविटीज गुडा को एजुकेशन रो करूची सेतेल को हमें जानिबे जे जदर गोडसी प्रोग्राम हला एसएसए हला सर्व शिक्षा अभियान हला आउ कोनसी प्रोग्राम हला तो तार इवैल्यूएशन हमें करूचे केते इफेक्टिव हला इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन कोन हेतियो भाबुछ मैम पावें तो काउंसलिंग तैयारी करेंगे तार प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करियो पड़े रिजोल्यूशन सो इंस्टीट्यूशन रो केते क्वालिटी रहची आगे मैम सो एजुकेशन दी प्रकार कांसेप्ट ए चैप्टर देइची सो प्रथमे हम पढिया प्रोग्राम इवैल्यूएशन एजुकेशनल एंटरप्राइज प्रोग्राम कैन बी गोटे प्रोग्राम रो डेफिनेशन मध्ये देइची बहिरे तो डिफरेंट एक्टिविटीज हमें करूचे से गुडा को ही प्रोग्राम गुडा को रहिची सो इट शुड बी रन विथ द इवैल्यूएशन तार करिया कथा कारण केते इफेक्टिव हला हम केमति जानिबा so whenever we are running any program or executing any educational program in our institution we have to evaluate its effectiveness whether it is effective or not whenever we are giving mdm attention to mdm whether it is effective for our quality education or not whether it is changing our system or not na ताको हमको देखिया को पड़े ओटे एग्जांपल देली so what is the purpose of program evaluation okay so main purpose is to facilitate decision making about the launch of program to contribute decision about program continuation the program ta hame continue kariba ki न kariba to find evidence in the favor of program to find evidence to pressurize discontinuation of program eta continue kariba ki न kariba एई एसएसए हला सर्व शिक्षा अभियान हला एटा इफेक्टिव और नॉट जदी नाही गोटे वर्ष रे हम देखले ना एटा इफेक्टिव होउने कोनसी प्रकार परिवर्तन होउने तो काहे कि हमें ताको नेक्स्ट ईयर रन करिबा काहे कि अधिका पैसा खर्च करिबा तो सेति पई हमकु इवैल्यूएट करिया को पड़िता वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट सो डिफरेंट एरियाज ऑफ इवैल्यूएशन प्रोग्राम इवैल्यूएशंस आर देयर हां से सो डिफरेंट गोल्स रिसोर्सेस प्रोसेस एगुडा को सब हमको इवैल्यूएट करिया पड़ता है जे तारा गोल गुडा बा ऑब्जेक्टिव ठीक अछि कि नाही रिसोर्स गुडा को ठीक से दिया जाई पारछि कि नाही प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन बा एग्जीक्यूशन ठीक से हेई पारछि कि नाही प्रोग्राम टा इट्स मैनेजमेंट टीचर्स में ठीक से करि पारछन्ति कि नाही एवं आउटपुट बा एमति हमें कहबा पिलांगर पाठ पढा रे किछि परिवर्तन हैला कि नाही किछि डेवलपमेंट हैला कि नाही सबु जाक जिंस हमको जजमेंट करिया को पड़िबो ओटे वैल्यू जजमेंट हमको करिया को पड़िबो सो करिकुलर डेवलपमेंट होची कि नाही और ऑर्गेनाइजेशन आउ तार फंक्शनिंग ठीक से चालुची कि नाही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होची कि नाही प्रोडक्ट सिस्टम रे तार अचीवमेंट होची कि नाही ए सब जिंस हमको इवैल्यूएट करिया पड़िबो अदरवाइज हमें ताकू सेही प्रोग्राम ताकू सेठी रन करिबा नाही सो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोग्राम इवैल्यूएशन को एस्पेक्ट को देखि के हमें इवैल्यूएट करिबा इट्स गोल हां इट्स रिसोर्सेस एंड इट्स प्रोसेस मैनेजमेंट इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसीजर इवैल्यूएशन ऑफ रिसोर्सेस एडा को सब हमको देखिया को पड़िबो जे वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट हां तो ताको परीक्षा करिया को पड़िबो बेले बेले हमें कहिता ना ए प्रोग्राम ता गवर्नमेंट करूची सिना तार किछि फळ नै किछि परिवर्तन हो नै केवल पैसा नष्ट होची सिना किछि इधर ओडे बेले हमें देखू ट्रेनिंग देवा पे इन सर्विस टीचर मन को डाकी थाउ से माने हां गोटे बाध्य होई कि हमें आसुचो हमें घरे खाई पी कि थिलु एटू थिलु एते बाटा हमको पठै देले आसी कि हमें एठी काम कलु किछि हमर इच्छा नै हमें एमती टिप टिप जा गोटे लिखि कि दे दु किछि परिवर्तन हला नै ना सेटा केवल गला केवल फाइनेंशियल बिल गुडा को गला किंतु किछि टीचर्स मानकर किछि परिवर्तन हला नै बा किछि बुझिले नै सर बस से माने आसी कि सिग्नेचर कर दे कि पळि गेले तो एठी हमें कहि परिबा जे किछि प्रोग्राम रो इन सर्विस प्रोग्राम रो किछि इफेक्ट पड़िला नाही सेति पई सब प्रोग्राम रे हमें टेस्ट करि थाउ जे से किछि बुझी पारले कि नाही ट्रेनिंग प्रोग्राम रे तो देखले आलो किछि से माने क्वेश्चन आंसर देई पारु नाहंती ताले हमें कहबा ए भलिया प्रोग्राम रो कोनोसी वैल्यू नाही
केवल एटा गोटे करागला किंतु तार किछि वैल्यू नै सो एटा हम जानिबा कथा सो तर आरो वर्ष से भलिया प्री सर्विस सॉरी से भलिया इन सर्विस प्रोग्राम हमें इंप्लीमेंट करिबा नै सो इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस जेंति इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन कहउतिले जेंति प्रोग्राम इवैल्यूएशन कथा हले सेति आ गुटेला कोन इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस बा इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन सो कहा को नेकी करा जीवो जेंति तमे कहउतिलो इंस्टीट्यूशन रो स्टूडेंट पेरेंट्स टीचर्स ए सबु एस्पेक्ट को देखि कि हमकु गोटे इंस्टीट्यूट ठीक इफेक्टिव अछि कि नै एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ताकू हमकु देखि इवैल्यूएट करिवार अछि सो बेले हायर अथॉरिटीज माने आस्थांती स्कूल विजिट करिया को कॉलेज विजिट करिया को से माने सब विभिन्न प्रकार डाटा गुडा को नै थांती तो रिसर्चर माने भी रिसर्च करथांती जे इंस्टीट्यूशन ता इफेक्टिव ना इंस्टीट्यूशन ठीक से फंक्शन करछि कि नै सो दे आर आल्सो इवैल्यूएटेड they are also rating your organization so you can observe parameters of institutional evaluation देखो टिके कौन सब अछि different indicators देखो से गुडा सब ही रही गोल्स रिसोर्सेस प्रोसेस बही अच्छी तमर एटा देन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट कौन सो रही लीडरशिप टीचर क्वालिटी sorry को एस्पेक्ट को देखि के हमें इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट करबा कोन सब कंपोनेंट को देखि के ना को सब कोन सब अछि मैम एकेडमिक परफॉर्मेंस तबरे टीचिंग रो क्वालिटी तबे टीचर माने टीचर माने को क्वांटिटी देखा जिवो और से माने को क्वालिटी भी देखा जाय थे देन एग्जामिनेशन रिसर्च फील्ड लाइब्रेरी मैम फैसिलिटी स्टूडेंट अचीवमेंट तापरे हे गला तार लाइब्रेरी फैसिलिटी केते मिते अछि तार लैबोरेटरी केमिते अछि तार इक्विपमेंट केते कोन अछि तार इंफ्रास्ट्रक्चर केते डेवलप अछि टीचर केमिति क्वालिटी टीचर अछंती आ स्टूडेंट रो कैपेसिटी केते अछि स्टूडेंट रो अचीवमेंट रो केते बाहर अछि तापरे मैम एनरोलमेंट स्टूडेंट एनरोलमेंट अगेन सो एइत्रे मध्य गोटे मुखोपाध्याय classify different areas on which we have to also assess our institution leadership teachership quality linkage interface students co-curricular activities teaching office management relationship then material resources examination job satisfaction reputation of institution ए सब को देखि किने आमे गोटे अनुष्ठान को assess करबा हला एठी मध्ये देइछि तार गोटे डायग्राम मैम आसडा और भी लिखला हो ना हमें जोरा कहले सेरा हबो हां आहुरी अधिक मध्ये तुमे लिखि पारिबो अधिक तमे जदि चाहिबो किछि नोट करिकि तमे लिखि पारिबो जोटा तमे भाबुछ एटा गोटे केवल गोटे फ्रेमवर्क से देइछंदी गोटे मॉडल then dimensions of institutional assessment specified by NAAC एटा समरो नेशनल NAAC टा हम पढिथिले बदे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल आगे मैं गुथरे कहितले सातटा गुडा को आउ मैम तार रेटिंग गुडा भी जस्ट डे कहितले 3.51 प्लस रहिले A++ 3.26 रो 50 जंग रहिले A+, 3.1 रो 3.25 जंग रहिले B+, मिति मैम so it is mainly this organization is mainly assessing the higher education institution any college university तो सेठी नाक रो केते रहउची तार पॉइंट ताकू हमको देखिया को पड़ता है को ग्रेड रो जेमती सातटा क्राइटेरिया रहिची ताकू हमको दिया जाय थाए जे एईटा को से माने देखि किना रेटिंग देबे को एस्पेक्ट करिकुलर एस्पेक्ट टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन रिसर्च
infrastructure, learning resource, student support or and progression एटा organization and management other any healthy practice ए सबु को से माने assessment करिकी मार्किंग करथांती हैला जा जो कॉलेज रे ए सब जिंस होउची भलो क्वालिटी रो होउची से माने सबु A++ पाइबे तम इग्नोर सबु बहुत भलो होउची तेनु कोन A++ तबे पाइचो देन मैम गोटे क्वेश्चन डाउट ला कहले जो मैम सुभुनी आज्ञा हेलो हां को राकेश को मैम ठीक है हेलो हाँ कहली मैम ना को सब इंस्टीट्यूट को माने रेटिंग दोचे आउ सेकंड क्वेश्चन हला जो नॉर्मल स्कूल माने के जो स्कूल ला सब रहउचे ताको सब के माने रेटिंग दोचे आ ताको के ग्रेड दोचे स्कूल स्कूल को हमें नाकटा जो रही सेटा केवल हमर रेटिंग दौची कॉलेज आ यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बुझी पाले सबु जत्ते को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ताको ना को दो स्कूल गुडा को से रेटिंग दोने स्कूल के सुनी छ एटा A+, B+ एमटिया किछि मैम सही कथा कहले माने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ताको नाक दे सिमिलरली ए हमर जते रहला स्कूल कि कॉलेजेस अछि नॉर्मल +2 कॉलेजेस ताको के सब रेटिंग दे कि तारी इवैल्यूएशन रेटिंग के ही कोन से स्कूल ला किछि एंती A+, B+ किछि नाही ताको केवल मॉनिटरिंग करा जायते हायर अथॉरिटी आस्तांती जेमति कि हमर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बा ए माने सब जो माने एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व रे थांते से माने मॉनिटरिंग सुपरविजन पाई जाई थांती हां से माने जाई कि सीआरसी जो बीआरसी जो एलिमेंटरी स्कूल गुडा कहला से माने जाई कि मॉनिटरिंग करथांती किबा कोनसी जो हमें कहि परिबा कम्युनिटी तमर कमिटी मेंबर्स माने सेही अनुष्ठान से माने ही केवल जाई कि सेडा देखि तांते ठीक से क्वालिटी मैनेजमेंट होची कि नै विलेज एजुकेशन कमिटी से माने ही ताको मॉनिटरिंग करथांती आउ एई गुडा को जो ता नाकटा रहला सबले मने रखो एटा हायर एजुकेशन अनुष्ठान जो गुडा को रहिची कॉलेज यूनिवर्सिटी ताकू से माने ए सातटा क्राइटेरिया रे मैन मॉनिटरिंग करथांते एवं किछि गोटे ग्रेड ताको ग्रेड गोटे देथांते थैंक यू मैम मैम ग्रेड रा सब कोन टिके कहि देताने जेमते रिसेंटली हमर रेवेन्सा पाइछि A डबल माने A++ सेटा पढिबा आज्ञा तो मैम आउ गोटे क्वेश्चन हला ए जो हमर यूनिवर्सिटी रैंक बाहर छै एवरी ईयर माने सेंट्रल लेवल ले इंटरनेशनल लेवल ले हम जो आम देशर बहुत कम रैंक रोचे मैम ता ऊपर कोन टिके कहितांदे काहे कि रोचे ओ केमिता इंप्रूव करि परिया हां सेटा वर्तमान तो एनईपी 2020 से विषय कहि जे तो हमर पॉलिसी सेमतिया तयारी हेई नथला किंतु 2020 रे जो एनईपी 2020 आसिला ता ऊपर क्वालिटी डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन सेति पे से बहुत गुडे कथा लेखा आइची मु भाबुची से गुडा के ही गैप्स जोटा नाही से विषय ही से माने लेखि चंती एनईपी 2020 रे से गुडा को जतले हम इंप्लीमेंट करिबा निश्चित भाव रे ग्रेजुअली हमर क्वालिटी डेवलपमेंट हबो जेहेतु हमर क्वालिटी कम अछि सेति पई तो सब जिंस गुडा का सजेशन दिया जाईची सेति रे सेटा टाइम लागिबो बहुत गुडे जिंस धीरे धीरे तमे देखुछ बहुत गुडे जिंस सेति रे कुहा हेची केमदी क्वालिटी इंप्रूवमेंट हबो टीचर्स रिक्रूटमेंट हबो ता सहित मध्य मॉनिटरिंग करा जिवो आउ विभिन्न प्रकार स्टूडेंट मानकर जेमदी ना कासी की ताकू मध्य पचारिबो कोन असेसमेंट करा जिबा कोन कले भलो होई परिबो एउडा का नाही बहुत गुडे जिंस हमर हायर एजुकेशन लेवल रे से बडा नाही सेति माइंड डिटोरिएट हेची जिंसरा तो बाबूजी से धीरे धीरे जतले हम सब इंप्लीमेंट करबा एनईपी 2020 निश्चित भाबरे सेटा आगु को बढ़ी परिबो आउ एटा सब देइची गोटे देखो प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट बाय नैक तमति की प्रिपरेशन ऑफ सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सब अनुष्ठान गोटे सेल्फ स्टडी रिपोर्ट बनेबे देन नाक रो मेंबर्स माने आसीबे विजिट टू इंस्टीट्यूशन दे विल विजिट द इंस्टीट्यूशन एंड फाइनली दे विल हैव टू डिसाइड जे याको को ग्रेड दबा मार्किंग टा किंतु एई सातटा जो कहली ग्रेडिंग टा जोटा करा जिवो एई सातटा क्राइटेरिया को देखि कि से माने ग्रेडिंग करिवे हला तो ये रही छी आउ गोटे कांसेप्ट रही छी तमरी सही ब्लॉक रे लास्ट आज तो टाइम हे गलानी तथापि मुटा चेष्टा करछि कंप्लीट करिया पई सीआईपीपी मॉडल जोटा रही छी
मैडम मैडम मते गोटे सेकंड चांस देबे कि टिके कहि थांती पिला नहीं सर इन्फॉर्मेशन एटा मु नेक्स्ट क्लास रे पढेबी सर एटा पिलांको एबे बहुत समय पढलेनी आउ से माने भी भूली जिबे एसु पढेले तेनु एटा पिला माने हम नेक्स्ट क्लास रे पढिबा एई जो कांसेप्ट रही छि इवैल्यूएशन रो सीआईपीपी मॉडल टा